अस्सलाम वालेकुम, आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और वॉर पे बात करेंगे विच रिलेट्स टू द इजरायली ऑब्जेक्टिव्स इन ईरान। हमने कहा कि हमने लास्ट एपिसोड्स में बात की कि किस तरीके से इजराइल ने हमला किया, बेसिक रूडिमेंट्री एनालिसिस किया। फिर हमने सेकेंड एपिसोड में बात की कि वाई इजराइल वेंट टू दिस वॉर, अपॉर्चुनिटी क्या क्रिएट हुई थी उसके लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स जो ऑफिशियली स्टेटेड हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स भी जो इजराइल ऑफिशियली एक्नॉलेज तो नहीं करता, बट एज एनालिस्ट वी सी दोज ऑब्जेक्टिव्स behind the attacks that Israel is carrying out against Iran for last few days. But before I go on to explain, आपको उसकी भी नजर होगा, this is again international relations का जो next session है, that is going to start from the 20th of June 2025, the next यानी Friday से ये पहला session होगा। और besides that there is another session of current affairs and Pakistan affairs which is going to start from the 26th of June. ये दोनों courses जो हैं ये start होंगे coming weeks में, and you can join them if you are interested in the upcoming CSS or the PMS examination, particularly from KP or any other province. Besides lectures, online lectures, this session would also help you in understanding the key dynamics और जो inter subject relationships हैं, जैसे international relations हैं तो how it is linked with the other compulsory and optional subjects, and अगर current affairs and Pakistan affairs है how it is linked with the other compulsory and optional subjects. इस हवाले से भी ये lectures जो हैं वो आपके लिए बड़े important होंगे. Additionally, you will also get the readings on these subjects and some of the recommended books as well. So get yourself registered on the given number. अब अपने इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन के ऊपर आते हैं, जिसमें मैंने कहा कि हमने बात करनी है अबाउट द इजराइलीज ऑब्जेक्टिव्स, द गोल्स दैट इजराइल हैज सेट फॉर इटसेल्फ। इसमें दो तरह के गोल्स हम बात करेंगे इस वार में जो इजराइल के हैं। एक वो गोल्स हैं जो इजराइल ने पब्लिकली ऑफिशियली एक्सेप्ट किए हैं, और कुछ ऐसे गोल्स हैं जिसके हवाले से ब्रॉडली स्कॉलर्स का ये व्यू है कि इजराइल हैज़ सर्टन गोल्स दैट इट मे नॉट पब्लिकली एक्सेप्ट बट इट डेफिनेटली हैज़ दोज गोल्स। तो सबसे पहले नाज़रीन, अगर मैं इजरायली गोल्स की बात करूँ और सबसे पहले गोल की बात करूँ तो दैट इज़ जो ऑफिशियली स्टेटेड भी है, दैट इज़ ईदर वीकनिंग और डिस्ट्रॉइंग Iran's nuclear program. Iran claims that its nuclear program is for civil purposes, but Israel and Western allies believe that Iran has a kind of hidden its nuclear program away from the international watchdog, that is International Atomic Energy Agency. और इसलिए there are credible suspicions on the part of the West and Israel that Iran is enriching uranium which is weapons grade and which could be used to develop a nuclear bomb. But when could Iran develop a nuclear bomb? This is something over which the Western agencies and Western scholars and Western governments have not been so specific, but they all agree that Iran cannot convert the existing stockpile of uranium into a weapon system, while Israel on the other hand has always been saying that Iran can turn it into a nuclear weapons in the shortest possible time, possibly in a period of weeks. And therefore Israel thought that Israel का जो स्टेट ऑब्जेक्टिव है that ईरान का जो पोटेंशियल न्यूक्लियर वेपन का जो थ्रेट है that poses existential and survival threat to Israel. Therefore Israel has no option but to target and dismantle the nuclear weapons program, and that's why नाज़रीन हम देखा कि सबसे पहला जो अटैक हुआ था that was on Iran's nuclear facilities. नतान्स के ऊपर हुआ और बहुत सारी जो ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स हैं जो आपको मैप पे नजर आ रही होंगी, उनके ऊपर इसराइल ने अभी तक टारगेट्स किए हैं। ये पहले ही कह चुकी है कि उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, विच मीन दैट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम इफ नॉट एलिमिनेटेड इट विल बी थ्रोन बैक इन ईयर्स। Besides this objective, there is another objective, and that is targeting the nuclear scientists. नाज़रीन, obviously बात है वेस्ट के अंदर एक हमेशा से apprehension रही है that because Iran was able to enrich uranium for more than 60%, or as per the NPT it cannot have enrichment more than 20%, और जो JCPOA थी उसके अंदर it was not supposed to cross the limit of 3.67% as per the JCPOA. However, since the violation of the JCPOA by the United States first and later Iran has crossed the limit, and it can enrich uranium more than 60%. अब प्रॉब्लम ये नाज़रीन कि अगर कोई नई न्यूक्लियर डील होती है और उसमें ईरान के जो एनरिचमेंट है उसकी फ्यूचर एनरिचमेंट को 20% से कम कर भी दिया जाता है, देयर आर एप्रीहेंशंस अमंग द वेस्टर्न स्कॉलर्स एंड गवर्नमेंट्स दैट जो टेक्निकल नो हाउ है, जो साइंटिफिक नॉलेज है जो ईरान के पास आ चुका है, जो उसके पास मैन पावर ट्रेन हो चुकी है
वो वहीं पे रहेगी. So Iran might have a low enriched uranium, but it will have the human resource and the knowledge to develop a nuclear weapons grade uranium, because it already has more than 60% of it. सो उस सेंस में इसराइल ने अपने पहले ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करके दूसरा ऑब्जेक्टिव ये किया दैट जो नो हाउ रखने वाले साइंटिस्ट हैं और जो लेबॉर्टरीज हैं जहाँ पे उनके हवाले से डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, दे मस्ट बी एलिमिनेटेड. तो इसराइल ने पहले गो में ही टॉप 3 साइंटिस्ट को टारगेट किया. उसके बाद कंसिस्टेंटली कभी तक जो एस्टिमेट्स हैं कि 9 के करीब जो टॉप साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, दे हैव बीन किल्ड बाय द इजरायली सो फार. तो ना सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि जो मैन पावर है, जो एक्सपर्टीज है, जो ब्रेन्स हैं, उनको भी एलिमिनेट करना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इजराइल, ऑल्दो इट हैज नॉट स्पेसिफिकली बीन मेंशन्ड एज एन ऑब्जेक्टिव, बट इट इज एन ऑब्जेक्टिव. थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इजराइल जो नेतन्याहू पब्लिकली कह चुके हैं, इट इज टू वीकन एंड डिग्रेड एंड पोटेंशियली एलिमिनेट द ईरान्स मिसाइल टेक्नोलॉजीज एंड मिसाइल प्रोग्राम्स. मिसाइल फैक्ट्रीज जो प्रोडक्शन की हैं या जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, उनको एलिमिनेट करना. Because Israel believes that because when you have a nuclear bomb, the second thing that you need is a missile that could carry the nuclear warhead. So Israel wants to significantly weaken Iran's nuclear missile capabilities, so that it could not carry out conventional or in future potentially nuclear strikes. And therefore हमने देखा कि इसराइल ने अभी तक जो अटैक किए हैं, उनमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो हमले किए हैं, उनमें मिसाइल फैक्ट्रीज के ऊपर, मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटीज़ के ऊपर जो हैं और मिलिट्री बेसिस के ऊपर जो हमले हैं, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किए हैं. Another objective of Israel is to target the military leadership. हमने देखा कि ये ऑफिशियली कहा तो नहीं है, बट दे हैव डन सो फार. पहले ही गो में उन्होंने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को किल किया, ही वाज मार्टेड. और फिर लेटर ऑन अब देखा कि जो सेकंड कमांड थे जिनको चीफ बनाया गया, इजराइल क्लेम टू हैव एलिमिनेटेड हिम एज वेल यस्टरडे. तो एक हवाले से मिलिट्री जो चेन ऑफ कमांड है और खासकर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की जो चेन ऑफ कमांड है, Israel is targeting them because he believed that these elements are involved not just in supervising a proxy war against Israel, but also they are the people who handle the Iranians' nuclear and the missile technologies, and therefore removing that chain of command is likely to significantly weaken Iran's capabilities and degrade its capabilities to potentially harm Israel. इसी तरीके से नाज़रीन, एक शुरू में रिपोर्ट आई थी दैट डोनाल्ड ट्रंप जो थे, he vetoed Netanyahu's plan to eliminate the supreme leader of Iran, who is Ali Khamenei. और आयतुल्लाह अली खamenei को एलिमिनेट करने का, उनको टारगेट करने का जो प्लान था, it was vetoed by President Donald Trump. But it showed one thing, that Israel has another objective of targeting the top spiritual and political elite leadership of Iran. एंड उसके बाद हमने कहा कि कल भी इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इफ अली खamenei इज रिमूव्ड then this could end the conflict with Iran. So I don't think so it will be the end of the conflict, but it clearly showed their inclination and ultimate goal of targeting the top political and the spiritual leadership of Iran, and particularly Supreme Leader Ali Khamenei. This is something that is likely to be crossing all the limits and will set a very, very dangerous precedent globally, because this would mean that targeting head of the state of a country, and not just head of the state but also the spiritual head of a community, the Shiite community across the world, that is likely to provoke the Muslim world, and it will perpetuate the conflict and not end the conflict. But it clearly shows the Israelis' plans, objectives to target the political leadership. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाजरीन, जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज पोटेंशियली रिजीम चेंज. हम देख चुके हैं कि इसराइल ने ये कभी कहा तो नहीं है, बट द वे इसराइली लीडरशिप इज टॉकिंग एंड मेकिंग स्पीचेस, और खासकर पश्चिन लैंग्वेज में इसराइली अवाम को डायरेक्टली जो स्पीच की जा रही है, टेलिंग देम दैट दे आर विद ईरान and they are not they're not against the people of Iran, rather they are against the government or regime of Iran, and which is clearly an indication that Israel is working to bring a regime change. एक और बहुत सिग्निफिकेंट जो हमें सिंबल इसकी नजर आई नाजरीन, वो जो रजा शाह पहलवी के बेटे हैं, who has been very proactive in the Western communities right now. He has been making speeches, talking to people, media, और वो उसमें बड़ा clearly Israeli campaign को support भी कर रहे हैं. And that is yet another indication that behind the scene the monarchic system is being brought back in Iran, or at least it is something that is worth trying. And United States and Israel are moving ahead with that. इसी ऑब्जेक्टिव की एक और इंडिकेशन नाज़रीन हमें कल मिलती है, जब डोनाल्ड ट्रंप ही लीव्स G7 summit earlier, goes back to the
यूनाइटेड स्टेट्स और उसमें मैक्रन की स्टेटमेंट आई कहते हैं ट्रंप इज पोटेंशियली टॉकिंग अबाउट द सीज फायर, बट ट्रंप ने ना सिर्फ काउंटर किया इमैनुअल मैक्रन की इस असेसमेंट को, बल्कि उन्होंने ये भी कहा दैट ही इज़ देयर फॉर अ बिगर काज देन जस्ट अ सीज फायर, और साथ ये भी कहा कि ही इज़ वर्किंग नॉट टू जस्ट हैव अ सीज फायर बट टू अचीव अ हायर ऑब्जेक्टिव ऑफ एंडिंग द कॉन्फ्लिक्ट. And how this conflict will end? Definitely, this would end by bringing regime change, because as long as this current Iranian government is there in power in Tehran, it is less likely that they would stop its conflict with Israel or make any peace with Israel in the short term. Therefore, ये तीन इंडिकेटर ऐसे हैं जो क्लियरली शो करते हैं that Israel has a broader objective of bringing regime change in Tehran. This is something that is likely to be very dangerous because मिडल ईस्ट में जितने regime change किए गए रिसेंट पास में, मैं हिस्ट्री की बात नहीं करूँगा, रिसेंट पास में जो किए गए लीबिया के अंदर, सीरिया के अंदर, इसी तरीके से हमने कहा यमन के अंदर जो इम्पैक्ट हुए, जो जितने regime change operations किए गए, इराक के अंदर सद्दाम के खिलाफ किया गया, I'm not saying that those regimes were very good regimes, but bringing the change and forceful change in them has brought chaos to their societies. And therefore ये regime change भी अगर by force लाया जाता है, जो इसकी पॉसिबिलिटीज मुझे बहुत कम नजर आती हैं, बट अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में दैट इज लाइकली टू सिग्निफिकेंटली टर्न Iran into a chaotic condition, the impacts of which will be suffered by the entire region, not just the Israel and Arab states, but also states like Pakistan. सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि ये जो इसराइल की वॉर है ईरान के साथ, इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ वॉर. हम पहले बात कर चुके हैं कि वाई इसराइल डिसाइडेड टू गो फॉर दिस वॉर. टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस वक्त जाके, बट ये जो गोल्स हैं ब्रॉडली इसराइल के, दे आर वेरी वेल टाइम्ड ऑन पार्ट ऑफ इसराइल, बिकॉज दे थॉट दैट इसराइल ईरान इज रीजनली एंड ग्लोबली आइसोलेटेड, एंड देयरफोर रशिया इज बोज्ड डाउन ओवर देयर, China is less likely to militarily help Iran as such, and therefore Iran stands isolated, and therefore it is believed that these objectives can only be achieved at this point of time. But क्या ये जो change है, is it in the interest of the West, and particularly is it in the interest of the region? Time will tell, but my assessment is that any attempt to further escalate this conflict is likely to perpetuate the broader instability that Middle East is facing since the attempt to create Israel, since the Balfour Declaration was imposed upon this region. Thank you so much, Nazim, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.